Hello food lovers, welcome back to my channel. I am Shamala and you're watching Shimi's Kitchen. Today let's make winter special gond ke laddu. Extremely healthy, tasty, rich in iron, calcium and protein. Specially made in winters and also great for new mothers. Not only mothers, but these laddus are also great for kids and toddlers. These energy balls are considered very healthy to consume in winters. गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स जैगरी, 1 बाउल मखाना, 150 grams badam laddu gond, 1 small grated dry coconut, 3 tablespoon besan, 2 tablespoon raisins, 3 tablespoon melon seeds, 1 teaspoon dry ginger powder, 2 tablespoon khashkhash, 1 cup wheat flour, 500 grams Desi ghee, 250 grams almonds, 200 grams cashews, 1 teaspoon cardamom powder. So let's begin the process. Bismillah. Add 2 tablespoon ghee in a pan. And next I'm adding badam laddu gond. Roast it nicely in a slow flame till it changes the color. रोस्ट करते वक्त ये पॉपकॉर्न की तरह फूलेंगे. Once you're done roasting this badam gond, transfer this in a plate. ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से क्रश कर लें. अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें. Add 2 tablespoon ghee in a same pan. Goes in 1 bowl of makhna. Roast it for a minute. And then transfer this in a bowl and set this aside till it comes to room temperature. Again I'm adding 2 tablespoon ghee. Add almonds. Roast this for a minute. And next I'm adding cashews. इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लें. रोस्ट करने के बाद एक प्लेट में या बाउल में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख दें. Add 2 tablespoon ghee in a same pan. Add grated dry coconut, melon seeds and khus. Now roast this for a minute. Once you are done roasting, transfer this in a bowl or plate till it comes to room temperature. Next step is to blend all the dry fruits. In a blender, add makhana and blend it coarsely. Next I'm adding almonds and cashews in a blender. Close the lid and blend it coarsely and set this aside. And now blend dry coconut mixture. Blend it coarsely and set this aside. Next step is to add all the blended dry fruits in a large plate or casserole, like dry coconut mixture, badam gond, cashews and almonds mix, everything in a one plate. इन सब को एक प्लेट में शिफ्ट करके अलग से रख दें. Next step is to add 3 tablespoon ghee in a same pan. Goes in besan. Mix nicely. अभी आप देख सकते हो बेसन अच्छे से पिघलने लगा है. अब हम ऐड करेंगे wheat flour. Give this a nice mix. Again I'm adding 3 to 4 tablespoon ghee.
Mix nicely. इसकी बाइंडिंग अच्छी सी होनी चाहिए. Add 3 more tablespoon ghee. Mix nicely. अभी भी मुझे लगता है कि बाइंडिंग अभी और होना है, तो अगेन आई एम एडिंग 3 more tablespoon ghee. Give this a very nice mix. अभी आप देख सकते हो इसकी बाइंडिंग हो गई है. अब इसको भी इस प्लेट में शिफ्ट कर दें. ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको भी शिफ्ट कर दें. नेक्स्ट आई एम एडिंग 1 कप वाटर. 1 कप का मतलब चाय के कप से 1 कप पानी डाल लें. ऐड जैगरी. इसको अच्छे से मेल्ट कर लें. मेल्ट होने के बाद ट्रांसफर दिस जैगरी मिक्स ऑन द ड्राई फ्रूट मिक्सचर. Mix it up nicely. And now add 1 teaspoon cardamom powder, 1 teaspoon dry ginger powder. Give this a very nice mix. And next I'm adding dry raisins और dates. आप dates भी यूज़ कर सकते हो. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद grease your hands with ghee and start making laddus. Make laddus while the mixture is still warm. Add more melted hot ghee to this mixture if it's not binding. You can store these laddus in an airtight container and enjoy with your family and friends. थकन, हड्डियों में और जोड़ों में दर्द हो तो ये लड्डू इन सब दर्दों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. So make sure you try this healthy recipe. These energy balls are considered very healthy to consume in winters due to its rich ingredients which are warm in nature and keeps the body protected from the chilly winters. So guys, make sure you try this recipe and let me know how it turned out for you. If you guys enjoyed this recipe, give me a great big thumbs up below and make sure to subscribe to our channel, and we'll see you next time. Take care. Have a nice day.